Hello friends, I am Mithar Sarangi welcoming you to Concept Cracking Zone. Today we will discuss about basic geometrical concepts. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं. Everything we see around us are of various geometrical shapes. So what is geometry first? Geometry is a branch of mathematics that deals with the property and relationship between point, line segment, ray, angles, etc. So this geometry literally means consists of two words like geo and metry. Geo means earth and metry means the measurement. So measurement of earth, it is the literal meaning of this geometry. So we will discuss about basic geometrical concepts today. तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट के साथ. पॉइंट क्या है? पॉइंट मार्क्स a specific location. It have no dimensions, that is, it have no length, no breadth and no height. So it have no size also. And it cannot be measured. A point can be a tip of a pencil, tip of a needle, but its tip cannot be a point because it is a little bigger one. So let's see another thing. We will take some points A, B, C and D, and you will see that I have written every letter capital. So a point should be denoted with a capital English alphabet. So that's all for point. Then we will come about the line. What is line? Line is a straight path that extends endlessly on both sides. It has length but it is infinite. We can denote a part of line like this. We can denote a line by 2 points on it, A and B. So it will be called as line AB and the sign will be like this. We can also name it like with a small English alphabet, that is L or M or anything like that. So next is line segment. Line segment is a part of line with two endpoints. Here line have no endpoints. Line का तो कोई endpoint नहीं था, पर यहाँ पर line segment का दो endpoint होगा, यानी इसका एक specific length होगा. देख सकते हैं ये कैसा दिखता है. पहले एक पॉइंट से शुरू करेंगे और दूसरे पॉइंट में खत्म करेंगे. इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट ए बी. इस तरह से लिख सकते हैं इसे भी हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे और इसे लाइन ए बी कहेंगे. अगला है हमारा रे. रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन बट इट एक्सटेंड्स एंडलेसली in one direction only. It have one endpoint and one endless point and one endless side. मतलब ये एक जगह से शुरू होगा और फिर आगे बढ़ता ही जाएगा. इस तरफ तो यहाँ पर उसका एंड है और यहाँ पर उसका एंड नहीं है. हम इसको रे यहाँ पर एक पॉइंट डाल के इसको रे ए बी कह सकते हैं. इस तरह से रे ए बी. इसके भी आगे और कई चीजें हैं, इसको हम देख लेंगे. तो चलिए देख लेते हैं डिफरेंस अमॉन्ग लाइन सेगमेंट एंड रे. So for our first item is length. It have no definite length. Line segment have a definite length, but ray do not have a definite length. Endpoints. Line have no endpoints. Line segment have endpoints. It have two endpoints, but ray have only one. Notation. How it can be written? Like if it is line, it can be if xy is a line, then it can be written as this. I have said earlier, like this. And line segment, it can be written as this. If x and y are line segments, they can be written as this. If xy ray is this, then we can present it as ray xy like this. So हम आगे कुछ और चीजें देखते हैं. So let's see about intersecting lines. What are they? Intersecting lines. Two lines intersect at a point, then the two lines are called the intersecting lines, and the point where they meet is called the point of intersection. These are all the concepts of intersecting lines.
The examples can be the two road crossings or the multiplication sign, and many others examples can be there. So we will take one here. Note at this AB and CD. So here यहाँ पर AB और CD पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. AB और CD लाइन पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर O है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, and AB line and CD line will be the intersecting lines. So moving to our next topic, parallel lines. What are they? Two lines do not intersect each other even when they are extended to the full forms. Like मतलब अगर two railway lines आगे चलते ही जाएंगे, वो कभी मीट नहीं करेंगे. और दो रोड के दोनों एज भी ऐसे हो सकते हैं, एक टेबल के दो एज हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं. यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. Like name these as A and B and X, Y. So here line AB and line XY are parallel. That means they have no common points and they do not meet even when they are extended. So these are the concepts of parallel lines. It can how we will write it as like AB line AB parallel to line XY. So it will be written like that. So coming to our next point, concurrent lines. Concurrent lines. Three or more lines pass through a single point. Then it is called the concurrent lines. Difference between ये और ये बहुत मतलब सेम जैसा है, पर यहाँ पर दो ही लाइन्स होंगे और यहाँ पर दो से या ज़्यादा ही होंगे, या है तो तीन होंगे या फिर उससे ज़्यादा होंगे. तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये L, line M, line N and line Q, and this common point as O. So here line M, N, and Q are the concurrent lines and the O is called the point of concurrence. So these are all the concept of concurrent lines and parallel lines along with the intersecting lines. So some more is left, till keep watching. So let's see about collinear points. Collinear points. Three or more points lie on the same line, then they are called collinear points. This is the concept of collinear point. Now let's see about it. If we take this line as line L and A, B, C, D, and we can take many more, 3 or more, 1, 2, 3, 4. So it is more than 3. So this is called the collinear points. A, B, C, D are collinear points. So next we come to the non-collinear points. As from its name हमें ये पता चलता है कि ये इसका जस्ट उल्टा ही होगा. तो देख लेते हैं ये क्या है. 3 or more points do not lie on the same line. जो 3 या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं होंगे तो उसे हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. देख लेते हैं कैसे. अगर ये एक लाइन है और यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है डी, तो ए बी सी डी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो आगे के कुछ और चीजें देख लेते हैं. So let's see about curves. Curves, what are they? Curves, the figure that is drawn without lifting the pencil is called a curve. अपने पेंसिल उठाए बिना कोई भी मतलब डायग्राम बना दो, वो एक कर्व हो जाएगा. ये भी एक कर्व है, एक अजीब सा कर्व है ये भी,
ये भी एक कर्व है, एक सर्कल भी एक कर्व है, और कई और भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व ही है। अब यहाँ पर एक कॉमन कंसेप्शन ये है कि द कर्व्स आर ओनली, मतलब कर्व्स इज कर्व बट नॉट इन मैथ्स। Curves can also be a straight line like this. It is also a curve. So, coming to our next, simple curve. What is simple curve? Simple curve that does not cross itself. The curves that does not cross itself are called the simple curves. Like this, it has crossed itself multiple times, like here and here, here. So it is not a simple curve. It is not a simple curve. But here it is also not the simple curve. ये भी एक simple curve नहीं है. ये एक simple curve है, ये भी एक simple curve है, और ये भी एक simple curve ही है. अब आगे हम देखेंगे कि open curve. ओपन कर्व क्या है? जो कि खुले होंगे, मतलब डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट। जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म नहीं होगा ऐसा। इफ यू बिगिन एट दिस देन इट विल एंड एट हियर। दैट द ओपन कर्व्स कंसेप्ट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओपन कर्व। एंड begin with here and end with here, it is open curve, and many more like this and many more. Now we come to our last concept, last topic, closed curve. What is closed curve? Closed curve begin and end at the same point, thus opposite of the open curve. Begin and end at the same point. This is a closed curve. This is also a closed curve, but this is not a closed curve as started with here and finishes with there. So closed curve can be here, and it is also a closed curve. It is a closed curve but not a simple curve. It is a closed and a simple curve. So by these words we have finished the basic geometrical concepts. तो हमारे आगे की वीडियो में हम पॉलीगन के बारे में जान लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात पॉलीगन के बारे में बताना चाहूँगा कि पॉलीगन्स एक क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। लाइक ये एक पॉलीगन है, एक स्क्वायर एक पॉलीगन है, कोई भी अगर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, कोई भी मतलब क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो वो एक पॉलीगन में आता है। तो आगे के वीडियो में हम पॉलीगन्स के बारे में समझ लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कंसेप्ट क्रैकिंग जोन को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम आपको मैथ्स की कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखते रहिए हमारे अगले वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर टुडे।